So, people, now you can start the meeting, okay? Yes, sir. Sorry, just got stuck. Okay, fine. Hi guys, good morning. So what we were discussing since last two classes, first it was a basic understanding about the programming language, then few installation, and then we had seen, okay, if there is installation is a challenge, we can also use a cloud-based tool. Which cloud-based tool we are working with? It is Colab. Okay, similar to Colab, we have other things are also there, right? So Colab requires what? Colab requires your Gmail account, right? And after you code, after your project will be done, you can also download from here your final output. Okay, the final project that you created or final file that you created, लास्ट में जो भी आपका फाइनल फाइल बना आप उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, isn't it? Anyway, so now we have seen the basic. I'll just give a quick revision. We have started with the variables and values. Okay, we understood what is variable and what is value. Variables are something which has a capability to store certain value, right? And that value can be reused with the help of variable. Like with the help of this variable name, I can use this Arun as many times as I want. like जितनी बार भी चाहूँ आप इस नाम को यूज कर सकते हो, right? You don't have to remember the name, right? So that is what variables in value. Second, we had seen the types of data. Okay, like what are the types of data we can store? So if we consider numerical, it will be integer and float that we can store, right? So we had seen how can what is integer, normal, any number is an integer, any decimal number, any number containing a decimal will be a float, anything within the quotes will be what? String, right? Thereafter, okay, these are the things we had seen. We had seen what? List. Okay, so list is what? Is a sequential data type in which a data will be stored in a sequence, right? So we just end our discussion on the list in the last class. So we'll continue from here. Let's I'll create a new file. Okay, okay, thanks Aditya. Okay, sequential data type list. Okay, so how can we do use it? Let's see. Let's see. I have a kind of any particular information that I want to store. Like suppose I have a name of employees. Okay, we have a suppose kind of a weight, right? Like for example, patient weights. Okay, so any such information where we have to create a collection, right? So in those cases, we can do what? We can use a list, right? That we had seen. Okay, so why am I telling you again this thing? Because there are certain new things that we will see in list, right? Okay. So it's like certain name I have defined. Thereafter, I'll define over here some weights. So weights are numerical values. So I can define it in numerical form. 57.5, okay, 34.6, 45.5, 55.9, 6.5. Okay. So these are the things we have, right?
Now we know if I have to find out the length of a list, right? What can we do? Okay. If I have to find out the length of a list, we can use the len function, right? So items in employee names, len of employee names. Okay, len function can help us. Okay, see, this is what we do. Thereafter, if we have to identify items in patient weights, okay, I can use what patient weights. Okay, there are 8 over here, right? So this is how we can work upon it, isn't it? Now, there are values, multiple values. So each value used to have what? Used to have an address. Okay, so let me share this file with you before I go ahead. Okay, previous one. Okay, I'll share the previous one as well. Okay, I have shared two files. Okay, today's one, the previous one. Okay, is there a way to ask a doubt? Okay, audio. Okay, audio thing. I'll just connect. I'll just try to kind of raise a request from my end as well that audio can be enabled for all of you so that you can unmute and ask, right? As of now, you can just put your doubts in the chat. Okay, I'll try to sort it out, right? Kanis, I noted it down. I'll just try to sort it out so that you can unmute your audio as well. Okay, so length we can easily find if we have a sequential data. If we have multiple items in a single variable stored in a square bracket, it is list, right? Here through this thing we can find out the length. Now there is a concept in list which is called what? Indexing, right? So what indexing do? Through indexing, you can identify a single item from the collection. Okay, जैसे मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए इसमें से, तो how can I have the name? Okay, so by using the index, right? So index कैसे काम करता है? Simple, we require the variable name. ठीक है, variable name आ गया, and thereafter index. So index will start from 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, clear है? So this is how at 4 we have Raj, right? At 2 what we have? Rahul, right? Okay. Same way if I talk about weights, patient weights. All right. If I will take a index value, suppose 3, so what 3 will return? 55.9. Okay. So if you know that, okay, through a index you can access a value, then you can also modify or kind of a change the value. आप उसे change भी कर सकते हो, है ना? या आप अगर किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, you can also change it, right? So for doing that, what you require this thing. This is what representing a particular value in the collection, right? I want to change it. Okay, like Rahul, I want to change something else. Like let's say I want to make it Ramesh, right? So this will be updated in the list. Okay, so list is what? List is mutable. Okay, mutable means what? The changes are acceptable in it.
Okay, at any point of time, the changes are acceptable. There are few variables in which changes are unacceptable. Okay, but in the list, changes are acceptable, right? You can see earlier it was before applying the change, it was Rahul, but after applying the change, it becomes Ramesh. All right. Okay. Same way, let's talk about weight. Okay. So suppose I have to do what? I have to add 5 into the weight at index 3. At index 3, whatever weight is there, whatever weight means what? EMP, sorry, patient weights. Okay. So these are the patient weights at index 3. Index 3 means what? This is my index 3. Okay. I have to add 5 into it. All right. Let's add 5. Okay. And after adding 5 and replace with current value at index 3. And replace with current value. Current value is what? If I have to replace with current value, I can do what? I can just use this thing. Isn't it? So let's see. If you talk about the patient weight, so it is 55.9. So after doing this manipulation, okay, it should be what? 60.9, isn't it? Let's see. All right. So that's why we call a list as a data type which can be manipulated, which can be modified. So it is a mutable data type. List is what? List is what? List is a mutable data type. All right. Okay. So these things we see. Now after this we have to see what? The slicing. Okay. Slicing means what? Slicing means slicing out a small portion from the larger portion, right? Like from this larger portion, I have to slice out these 4 values. Okay. So how can we slice? Okay. So for slicing, we require 2 things. First, the list variable, obviously, right? List variable to chahiye, right? And thereafter, the point from which you are initially slicing. So initial index. ठीक है, कहां से आप स्लाइसिंग स्टार्ट कर रहे हो? देन अगेन इनिशियल इंडेक्स प्लस नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कितने आइटम्स आप स्लाइस करना चाहते हो? सिंपल नंबर ऑफ स्टेप्स भी बोलते हैं, बट नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल वी नीड टू स्लाइस दीज 4 गाइस, राइट? अगर हमें इन 4 गाय लाइक आइटम्स को स्लाइस करना है, देन इट वुड बी व्हाट? Initial index is 2 and from 2 we want 4 values, right? So print initial index is what? 2 colon 2 plus 4. Okay. Nice. Final index you can't give, right? The reason is I'll show you. See,
Here we have index 0, here we have index 1, here we have index 2, here we have index 3, here we have index 4, here we have index 5, here we have index 6, and here we have index 7. Right? We want these 4 values, right? Okay. So here that means here you are saying that you can use 2 colon 5, but this will not work. You have to give 2 colon 6. Initial index is like this, final index is 5, but we can't give 5. हम 5 नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ 5 यूज करोगे तो इट विल गिव यू ओनली 3 थिंग्स, because 2 plus 3 is 5. Okay, so that's why it should be 6. I hope I'm clear. Okay, thank you, Kanis. Okay, now we have to discuss few functions of list. Now what is these functions? Functions of list. Now what is this functions, right? See, what is mathematical function? Mathematical function आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, right? क्या होता है? Okay. If I write over here, because it is the most basic thing in maths, I guess everyone had studied it in class 9, 10 somewhere. Okay. F of x, if I write over here, is equals to x multiplied by 2. So what it means? It means that there is a rule defined. Okay. उस rule के according this function will work. है ना? जो भी एक रूल डिफाइन हुआ है उस रूल के अकॉर्डिंग ये फंक्शन आपका परफॉर्म करेगा. यहाँ पे अगर मैं 5 की यूज करता हूँ तो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 10. ओके. अगर मैं f ऑफ 7 यूज करता हूँ तो 7 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 14. राइट. So whatever value that you feed, according to the value you feed, this rule will be applicable and it will perform its job. ये होता है फंक्शन, राइट? Okay, so Python में क्या है कि Python is having few functions predefined. Okay, जैसे Python में list के लिए there are few functions which are predefined. That means there are few things to work, there are few rules to work. Okay, which are predefined, right? So you have to just see them. How do they work, right? Like for example, I have to add a new item. I have to add a new member. Okay, how can I add a new member into the existing list? So let's see. First function is what? Append. What append will do? To add a new member into the list. Okay. See, we had seen that how can we replace a value, but how can we add? Like for example, these are the collections of information. Like these are the employee names we have. There is a new employee name I have to add. Okay. How can we add it? We can add it through append function, right? How append function will work? Let's see. Employee names dot append. Okay, what I have to add over here, like any name, like suppose I want to add over here Arun. Okay, so it will be the new member of this whole collection. Okay, now you may think like, how will I remember this function? See, you need not to remember. Okay, you need it or need to keep memorizing this thing. No need, right? Because these are the simple functions which will be automatically came into your practice as you use it for as many times. Okay. So append will do what? We'll add a new member into the existing list. Can you just have a look, go through the things and execute it? If you find any problem, just let me know. I can wait for 1 minute.
Okay. So this is how we can append. Now suppose if we have to remove an existing function, existing item. We have to remove an existing item, then how can I remove it, right? So for removing, we'll do what? We can use remove function, right? To remove an item from list. All right. Okay. Like if you're coding something, right, and you just accepted a value, okay, like you created an application, okay, and you accepted a value from user, like user is making some registration. ठीक है, यूजर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहा है. सो इफ देयर इज अ न्यू यूजर, यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू समवेयर. ठीक है, आपने यूजर से कुछ वैल्यू एक्सेप्ट किया, तो आपको उसे कहीं तो स्टोर करना है. ठीक है, तो आप नई वैल्यू को कहीं स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे? अपेंड. पहले से एक डेटा ऑलरेडी है, पहले से एक डेटा टाइप ऑलरेडी है, उस डेटा टाइप में न्यू वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो. ओके. And in case you have to remove n, because if you are inserting something, adding something, okay, you have added a new value, you have added a new item, you also have to remove some item at some point of time. Okay, so how can you remove it? Okay, so for removing, what we will do, we'll use remove function, right? So let's see. Dot remove. Okay, what I have to remove? Any name, like suppose people have to remove. So if you see, first I printed the original value and then I'm printing the updated one, isn't it? Okay, you can see it has been removed from the collection. Earlier it was there, but using remove, we have removed it. All clear? Okay. Next we have what? There is a function called insert, right? Why insert required? See, when we are talking about the append, append will always add a new member at the end. ठीक है, ये हमेशा लास्ट में, एक फिर से आप अपेंड एग्जीक्यूट करोगे तो इसके बाद एक नया मेंबर ऐड होगा, राइट? सो ऑलवेज इट विल ऐड एट द एंड. ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उसके बाद एक नया मेंबर ऐड हो गया, एग्जिस्टिंग लिस्ट उसके बाद एक नया मेंबर ऐड हो गया. दैट्स हाउ अपेंड वर्क्स. इन केस इफ यू हैव टू ऐड अ न्यू मेंबर ओवर हियर, आपको इधर कुछ तो ऐड करना है, आप क्या करोगे? This is index 0, this is index 1, this is index 2. That means you have to add something at index 3. Okay, and then 4, 5, 6 and all are there, right? So at index 3 you have to add something, so that can be done through insert. To insert a new entity within an existing list. Okay, so it can be what? Okay, emp names dot insert. Okay, what I have to insert? I have to insert a new item over here, right? So where should I insert? You can see first I have to pass the index. Index what? Suppose index 3.
Okay. At index 3, what do you want to insert? It can be anything. Okay. Like suppose I just want to insert joy. Right. So it will do what? At index 3, which is this point between Ramesh and Raj, there will be a new item that will be added. There will be new name that will be added. एक नया name insert हो जाएगा. That is joy, right? Okay. So what's the difference between append and insert? Append by default, right? If you're using append with your list, append will by default add a new item at the end. ठीक है, हमेशा लास्ट में आइटम को ऐड करेगा एग्जिस्टिंग लिस्ट में. रिमूव क्या करेगा? किसी भी एक आइटम को रिमूव कर सकता है एग्जिस्टिंग लिस्ट में से, राइट. और इंसर्ट क्या करेगा? इंसर्ट कैन ऐड अ न्यू आइटम somewhere you have defined. Okay, to insert a new entity within an existing list at a defined index, जो भी आप इंडेक्स डिफाइन करोगे उस पे इंसर्ट करेंगे. Through, okay, there is a question, through insert we can add a new member at a desired index, right? Can we add more than one member? It is a very good question asked, right, Kanishk? Thank you. Okay, so I'll discuss it, right? Can we add more than one item in a existing using insert, right? Let's see. More than one item means what? It's like, suppose I have a existing list over here. Okay, now I have to add more than one item. All right, so emp names dot append. Okay, so first let's try with append, right? Okay, so with append, if I'm trying over here, then we'll try with insert. Okay, then we'll see what can be the better solution, isn't it? So let's say I'll just pass a few names over here like John. Okay, just a minute. Okay, so John, let's say I'm passing few names more like Abhay. Okay, so it's like two things I have defined, right? And I want to append. Will it work? Let's see. It is not working. That means this is incorrect. Okay, that means you can't append multiple values right here using this. So what the error? Okay, just try to read the error always. Okay, because error debugging is very important. Once you understood, once you kind of can read this error, can understand, okay, you can do the programming easily. When you are doing incorrect programming also, then also you can succeed if you understand this thing. What it is saying? List dot append takes exactly one argument. It is saying that you can feed only one argument over here, but you are feeding two arguments. Okay, we are feeding what? Two arguments. We have to feed only one argument. Now how can we feed one argument? That is the question, right? So there is a way through which you can feed one argument. And what's that way? The way is you can create one more list over here. So this whole thing is a single argument now. So we have a list and then we have defined one argument over here. Within that argument, we have two values and then appending, and then we are again printing back, right? So now will it work? Let's see. It's working, but what it did, it creates a list within a list. You can see. If you want this, it is sorted. If you don't want this, then we have to do something else. Okay. Now let's define what? Let's define emp names once again. Okay, and I'll define these values. Okay. Now let's talk about insert, right? So again, emp names
डॉट इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में क्या पास करना है हमें यहाँ पे, इंडेक्स, कि आप इंसर्ट तो कर रहे हो, इंसर्ट मींस कहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो, द इंडेक्स, राइट। So let's say index is 3, and then as you said multiple values. So multiple values, if you feed like this, will it work? No, obviously not. Saying what? Expected 2 arguments but got 3, ठीक है। अपेंड को क्या चाहिए, अपेंड को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, इंसर्ट को क्या चाहिए, सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट, ओके। जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट बताएगा इंडेक्स, दूसरा आर्ग्यूमेंट बताएगा वैल्यू, right? So it is saying that insert requires only 2 arguments, so you are giving 3, so make it 1. So now it is what, 2 argument, this is argument 1, this is argument 2, right? And thereafter again print emp underscore names, okay. So insert is also doing the same thing. It is doing what, it is adding the information somewhere in the between, but again it is a list within the list, right? So this is also, if we want this, it's okay, but suppose if I don't want, I want this should not be a list within the list, it should be a normal added value, then what can we do? Let's try again, okay. Here emp names dot extend, there is a function called extend, right? So extend can be used for what? Extend can be used to add multiple values into a single list, right? So let's see. Now let's see. Better? Okay. So through extend you can do what? A list can be extended with multiple values. All right. I hope it is fine. Is it clear, Kanisk, now? There is a way for that you have to use index for insert for multiple times. Okay. Insert you have to use for multiple times. Okay, that you can do through loop or something like that, because extend will always extend at the end. Alright, please go through the things. I'll give you 2-3 minutes. If you have to ask anything, please let me know. Here's a question. Can we add multiple values at a defined index? Like अगर मुझे यहाँ पे multiple values add करना है, तो मेरे पास एक ही फंक्शन है insert, और insert एक बार में एक ही आइटम लेगा। अगर multiple item यूज करना है, then you have to use it as a list within the list. But suppose I don't want it, I want to add one by one, I don't want list within the list, then we have to use insert again and again.
ठीक है, आपको इंसर्ट बार बार यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सटेंड कैन एक्सटेंड योर लिस्ट। ओके, आपको मैं एक और फंक्शन बता देता हूँ क्विकली, उसके बाद आप इस पे वर्क देख लेना। पॉप, इसका काम क्या होता है, दिस इज यूज टू रिमूव एन आइटम यूजिंग इंडेक्स। देखिए, जैसे रिमूव क्या था, रिमूव जो आपने देखा था, रिमूव इज बेसिकली रिमूविंग समथिंग, बट यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना था। ओके, यू हैव टू पास अ वैल्यू, देन दैट वैल्यू गेट रिमूव्ड, राइट। बट हियर इफ यू सी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू रिमूव जॉय, so what is the index of joy? 0 1 2 3, right? So I can do what, emp names dot pop 3. Is it fine? Okay, so kindly go through the things. I'll wait for 1 or 2 minutes and then we'll go ahead for the next part. Okay, there is a question over here. While inserting two names at two different index numbers, is it possible? Yeah, we can do that, right? It's see, we have over here
emp underscore names. Okay, but you have to do it two different time, right? Like पहली बार आपने emp names dot insert होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इंडेक्स टू ले लिया, ठीक है, और इंडेक्स टू पे लेट्स से आई एडेड समथिंग, ओके, लाइक लेट्स से what bz, okay, so now let's say we have a this thing, okay, अब आपको कुछ और ऐड करना है तो यू कैन यूज अगेन, आप यहीं पे ऐड कर लो या फिर, ओके, एक इंडेक्स टू, इंडेक्स फोर, इंडेक्स सिक्स, राइट, so you can add multiple value, right, Varun, Bimal, okay, right. So you can see we have added multiple values at multiple index. Okay. The only thing you have to done it for multiple times. That's it. Clear? Shall we go ahead? All right, guys. So let's move ahead. Okay. So we had seen few functions over here. What are the functions we had seen? Let me give you a list. Functions of list covered. Okay. So we had seen what? Append. Okay. We had seen what? Insert. We had seen what? Remove. We had seen what? Pop. Then we had seen extend. Okay. One more. Let's say this is what we have. Okay. emp names dot index. Okay. Index of a particular value. Like suppose index of Ramesh I want, right? Okay. So you can see index of
Ramesh. All right. Okay. So to find out the index of a particular value, okay, to find index of an item in a list. Okay. All right. So we had seen over here index as well. Okay. So this is a thing that I have created over here. Okay. So that anytime you can have a brush up, you can just see, okay, append, okay, in your back of your mind. You can realize what append do, what insert do, what remove do, what pop do, what extend, and what index. Okay. What is the difference between pop and del? So, okay, see, pop and remove, there is a difference. In a pop, you do what? You basically use the इंडेक्स वैल्यू टू रिमूव समथिंग. ठीक है, आप इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से आप रिमूव करते हो. ठीक है, जैसे फ्रॉम इंडेक्स 3 वी आर रिमूविंग समथिंग, सो एट इंडेक्स 3 जॉय वाज देयर, सो जॉय इज रिमूव्ड. ठीक है, यहाँ से जॉय रिमूव हो गया, रमेश और राज के बीच में वॉट एवर इट वॉज जॉय, सो जॉय वॉज रिमूव. ठीक है, क्योंकि दिस वॉज एट इंडेक्स 3. रिमूव में क्या होता है कि आप यूज करते हो डायरेक्टली द आइटम नेम. ठीक है, जो भी एंटिटी है आप वो यहाँ पे इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हो. आपको विपुल रिमूव करना है, यू आर यूजिंग विपुल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिमूव. नाउ यू आर सेइंग अबाउट डीएल. ठीक है, so del आपने यूज किया. सी इफ आई विल यूज del, whatever, let me just show you. Okay, so if I am using del, how will it perform? Let's see. Okay, so del is saying invalid symbol. That means del is not a function, okay, that can be applied like this. Okay, for it means what? Okay, just a minute. Okay, this is what, like, suppose I want to remove something, so if I will use this thing, so it is saying it is not a function which can be used like this. So if it can't be used like this, that means even if I will feed over here any name, okay, like suppose I have to remove Vijay, right? So I'll just put it over here Vijay. Okay, then also it will not work. Okay, then also it will not work, right? Then how can we use DL? So let's see. Okay, now let's say index 2, I am passing it over here. Now will it work? Let's see. Worked. So initially we are having what? We are having at index 2, there is a value called Ramesh. This Ramesh get removed. Okay. So del is what? Del is a conventional Python function. Okay, which can be applied in so many data types. It is not limited to list only. Okay, it can be applied to list, it can be applied to, in future you will say it can be applied to dictionary as well. Okay, so del is to delete something, right, from a collection or from anywhere. So it is a conventional Python data type. It is not just limited to list, right? जैसे ये सब जो फंक्शन है ये लिस्ट में के लिए ही यूज होंगे, सिर्फ लिस्ट के लिए ही बने. जैसे रिमूव फंक्शन है, ओके, इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर लिस्ट. पॉप फंक्शन है, इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर लिस्ट. Okay, but DL is something which is not limited only for list. Okay, it is a conventional Python function which can be used in so many other data types. That's why आप देखो यहाँ पे, जैसे हमने रिमूव में क्या यूज किया था, फंक्शन का नाम डॉट रिमूव, सॉरी वेरिएबल का नाम डॉट रिमूव, राइट. हमने रिमूव कैसे यूज किया था? emp names, emp what names डॉट रिमूव, ऐसे यूज किया था. emp names डॉट पॉप, राइट. बट डीएल में हम
वी आर नॉट यूजिंग दिस थिंग, ठीक है, हम इस वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव अ डीएल एंड विद इन दिस वी आर फीडिंग ओवर हियर व्हाट आई हैव टू रिमूव, ओके, फ्रॉम ईएमपी नेम्स इंडेक्स 2, इजंट इट? अगर आप सिर्फ इतना एग्जीक्यूट करोगे आपको क्या आउटपुट मिलेगा? अगर ये डेटा है तो आपको रमेश आउटपुट मिलेगा, तो आप कह रहे हो कि रमेश आप रिमूव कर दो, तो इट इज रिमूविंग इट। सो दिस इज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन डूइंग द सेम थिंग, ओनली हाउ टू यूज इट इज डिफरेंट, ठीक है। अब दोनों में से आपको दोनों पता है, इट्स गुड, आपको दोनों में से कोई एक पता है तो भी इट्स गुड, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड टू डू अ जॉब, ठीक है, आप किस रास्ते से करते हो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, you have to just finish the job, right? So if you are finishing the job by using remove function, acceptable. If you are finishing the job by using pop function, acceptable. If you are finishing it to delete function, it is also acceptable, right? If you know both of them, it's good. If you know one of them, then also it's good. Yeah, correct, correct. Who had given this? Kanishka. See, here, there is a good point over here. If we don't use index value in pop, it will automatically delete the last index value, right? What he wants to say, see, if this is your list or a collection of values, right? अभी आपको कुछ रिमूव करना है इसमें से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है रिमूव, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पॉप, और आपके पास ऑप्शन है डीएल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने पॉप यूज किया, ठीक है, एंड यू फॉरगॉट टू पास एनी आर्गुमेंट ओवर हियर, आप यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा? ओके, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओ, ओ, जैसे आपके पास एक लिस्ट है, अब देखो यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, सो इट विल बाय डिफॉल्ट, ओके, इट विल बाय डिफॉल्ट रिमूव द लास्ट एंटिटी इन द कलेक्शन, ठीक है। Okay, I want everyone others also to be little attentive and kind of ask the question, right? If you have doubts on any one of these things, just because if I am kind of for teaching, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन केस क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट में मिस कर जाऊं, ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो उस केस में दैट थिंग विल कम आउट ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे मैं एक्सटेंड मिस कर रहा था, ठीक है, अगर आप नहीं पूछते तो शायद एक्सटेंड में मिस करे तो आगे बढ़ जाता, बट आपने क्वेश्चन किया कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अ न्यू थिंग केम, एक्सटेंड, है ना। तो ऐसे वॉट एवर यू मे थिंक लाइक, आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन नॉनसेंस होगा, डोंट वरी, जस्ट आस्क, राइट, it may be an important question, right? So just ask the things, we'll discuss. Yep, delete will permanently delete the value from the list. Anything will delete, right? Pop will also remove permanently. Remove will also remove permanently. Okay. So these all things are removing the things permanently. If you see over here, when I used POP, right? So if you see, when I use POP, okay, pop, before this, I have also printed the list. So once I printed the list, thereafter I use POP and then again printed the list. Okay. So you can see it has removed it permanently. That's why your list updated. Okay. Your list updated. Same thing if you see remove here, I printed the actual list first, actual list, फिर उसके बाद हमने रिमूव किया, है ना, और फिर दोबारा से प्रिंट किया, ठीक है। तो अब देखो आपका लिस्ट अपडेट हो गया, है ना। सो इट मींस व्हाट, दीज फंक्शंस आर whatever effect they are having, those effects are permanent. It is just changing the values.
All right. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कहाँ गया दिस वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीओपी की जगह रिमूव यूज करता हूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल रेज एन एरर। ठीक है, क्योंकि रिमूव क्या करता है, रिमूव विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस आइटम इन द लिस्ट। ठीक है, अगर मैं रिमूव यूज करता हूँ तो ये एरर होगा, क्योंकि आपके लिस्ट में थ्री तो है नहीं ना। आपके लिस्ट में क्या है? आपके लिस्ट में सिर्फ नेम्स है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसे यूज करोगे इट विल रेज एन एरर। व्हाट एरर? दैट इट इज नॉट फाइंडिंग थ्री। ओके, x इज नॉट इन द लिस्ट। x मीन्स व्हाट? x मीन्स यहाँ पे आपने थ्री पास किया है, थ्री लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि कहीं पे भी थ्री तो नहीं है ना। isn't it? So it will raise an error. Okay, Samarjit, the difference between pop and remove, ठीक है? ठीक है, let's try to understand the first, let's try to understand the difference between pop and remove. Difference between pop and remove. Okay, so both are used to remove an existing item from a list. Okay, but can remove and update list, okay, by using index position, okay, of item. Okay, and what remove do? Can remove and update list by using item itself. देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे क्या है, emp नेम्स है ना। अब इसमें से मुझे इन दिस केस सपोज दिस थिंग आई हैव टू रिमूव। ठीक, सो आई हैव टू ऑप्शंस, पीओपी एंड रिमूव, राइट? डिलीट भी है, बट अगर हम यहाँ पीओपी यूज करते हैं, so what's the index of varun? Index of varun is 2. Okay, 0, 1 and 2, so I have to use 2 over here. So now if I print it, you can see varun is removed. ठीक है, अब बात करते हैं रिमूव की। सो प्रिंट, so this is my current list. Suppose I have to remove Raj. ठीक है, तो राज को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, emp नेम्स डॉट, आप पीओपी यूज कर सकते हो। अगर आप पीओपी यूज करोगे तो इंडेक्स क्या होगा इसका? 2। ठीक है, और अगर आप रिमूव यूज करते हो so you have to feed Raj over here. ठीक है, you have to feed Raj. ठीक है, so basically POP requires the index value that you want to remove, and remove requires the item name that you want to remove. Samarjit, is it better now? Okay, एक और क्वेश्चन है, एंड द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिलीट। रिमूव एंड डिलीट का क्या है? डिलीट एक सिंपल पाइथन फंक्शन है, उसका भी काम एक आइटम को रिमूव करना है। ओनली थिंग हाउ टू यूज इट, इसको यूज करने का तरीका अलग है। यहाँ डिलीट एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, और यू हैव टू पास व्हाट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर अजय रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा डिलीट emp नेम्स इंडेक्स 1।
ठीक है। इंडेक्स वन यहाँ पे क्या है, ईएमपी नेम्स में से इंडेक्स वन को रिमूव कर दो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज डिलीट। डिलीट विल डू द सेम थिंग, बट द जो वे ऑफ यूजिंग इज डिफरेंट। इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है। तो ठीक है, 1 मिनट तो चार्ज कर लो सिस्टम। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये हो गया। Maybe you will see the previous value will appear when I mean to say is pop remove value temporary not permanent है क्या? कहाँ आपको previous value दिख रहा है? यहाँ पे जब मैंने वरुण को रिमूव कर दिया तो आपको प्रीवियस वैल्यू कहाँ दिख रहा है? आई एम नॉट गेटिंग इट। या राइट, कर राइट कनेक्ट। ओके, दो क्वेश्चन है। इफ वी वांट टू रिमूव, ओके। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, these are the two questions, right? This is also a good question. Okay, Anil had asked. Okay, fine. So we'll discuss these three. Thereafter, we'll take more questions, right? If you use delete EMP name, it will delete the entire list. Correct. Okay. ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास EMP नेम्स है ना? आपको इफ यू डिलीट द होल थिंग, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे डिलीट EMP नेम्स यूज करते हो, so this will erase out from the this will erase out from the memory. Now see there is nothing. Okay, it will raise an error. अब ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने डिलीट कर दिया। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द आइटम आफ्टर इंडेक्स 3, तो अब क्या करें? अब यहाँ पे लेकर के आता है दूसरे वेरिएबल को, राइट? पेशेंट वेट्स। आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द आइटम्स आफ्टर इंडेक्स 3, राइट? सो in the like if you have to remove all the items after index, there are so many ways of doing it, right? एक तो तरीका है कि आपको लूप यूज कर सकते हो, बट लूप यूज करना भी मैंने आपको बताया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मली करोगे तो आपको बार बार करना है। आप पॉप यूज करो तो आप पॉप भी आपको बार बार यूज करना है। ठीक है, आफ्टर इंडेक्स 3 यू हैव टू यूज पॉप रिपीटेडली वन बाय वन, है ना? तो आप यहाँ पे बेटर होगा आप यूज कर लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आफ्टर इंडेक्स 3, तो ये आप इंडेक्स 3 कॉलन करोगे तो ये स्लाइस हो जाएगा, है ना? सो फ्रॉम इंडेक्स 3 ऑल द वैल्यूज यू पिक्ड अप। ठीक है। देखिए, एंड देन यू कैन यूज योर DEL। ठीक है, एंड देन यू कैन प्रिंट इट।
क्योंकि पॉप या फिर if you are using pop or you are using remove, okay, that deletes or remove one item at a time. ठीक है, तो अगर एक आइटम एट अ टाइम वो रिमूव कर रहे हैं तो आपको उन्हें बार बार एग्जीक्यूट करना है. ओके, दैट यू कैन डू थ्रू लूप एज वेल. ओके, लूप उस चीज को बार बार एग्जीक्यूट कर देगा, बट लूप वी हैव नॉट सीन टिल नाउ, सो दैट्स व्हाई नॉट गोइंग टू दैट डायरेक्शन. जब लूप पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ द बेस्ट वे इज व्हाट, यूजिंग डिलीट फंक्शन. डिलीट फंक्शन कैन रिमूव द इंटायर chunk in just one instance. All right, who asked this question? Abhishek, is it clear? Okay. अब आते हैं इस पे. If our list have two similar names, so which one will be removed? Okay, that's a very good thing. Okay, let's see. I have a I'll just create one list over here. Cities is equals to Delhi. Okay, Mumbai, Jaipur, कुछ ऐसे, इंदौर. ओके, फिर से दिल्ली कर देता हूँ, फिर से जयपुर कर देता हूँ, फिर से पुणे कर देता हूँ. Right. Now let's see if we have to remove certain thing, right? So आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? रिमूव यूज करना, राइट? सो इफ यू यूज रिमूव, so remove will do what? Will remove the first. Okay, like अगर मैं यहाँ पे दिल्ली रिमूव करता हूँ, राइट, so it will remove the first instance of Delhi, right? Remove can do what? Can remove the, like Delhi is appearing for two times, here and here. But whenever it is appearing, it finds it first. Okay, it will remove it. ये वाला remove नहीं होगा. Okay, this one will get removed, right? क्योंकि remove या POP क्या करता है? Remove और pop can remove only one item at a time. Okay, these functions can remove one item at a time. That's why it can remove only one Delhi at a time. Okay, so only one item or only one entity is removed from here. If you have to remove again, then you have to execute this thing once again, then it will also be removed. Okay, using POP you can do the targeted removal. Okay, like for example यहाँ पे भी जयपुर है और यहाँ पे भी जयपुर है. Okay, so you want to remove this Jaipur. Okay, if you use remove function, अगर आप remove function यूज करोगे तो ये वाला जयपुर रिमूव हो जाएगा. Otherwise this will be removed. So what is the index of this guy? Okay, so the index of this thing will be print cities. ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है? जीरो. दो तरीके से इंडेक्स डिफाइन आप कर सकते हो. एक तो हो गया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5. अपोजिट डायरेक्शन से करोगे तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5 एंड दिस इज -6. ठीक है, so you can use, do what? Either you can use cities index 4, you can remove, or cities index -2 you can remove, right? So you can do what? Cities dot pop index 4. So using pop you can do the targeted removal, right? और -2 भी कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा. ठीक है, चलो ये हो गया. और कैन वी, एक और क्वेश्चन है. कैन वी यूज, okay, this here question, can we use POP this thing? Okay, let's see. Okay, there is a question over here. Okay. तो चलिए इसको करके देख लेते हैं.
मैं पहले पेशेंट वेट डिफाइन कर लूं, ठीक है, आप इसे करते हो, ठीक है। नॉट वर्किंग बिकॉज पीओपी ऐसा कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लिस्ट के साथ ही यूज होगा, तो आपको लिस्ट डॉट पीओपी ही यूज करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट विल नॉट वर्क। I want to remove every value before after Indore. Every value after Indore. हाँ, तो आप DEL यूज कर लो, ठीक है, डिलीट फंक्शन के थ्रू कर लो आप, है ना। अगर पीओपी के थ्रू ही करना है तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा एक के बाद एक, ओके, मल्टीपल टाइम्स आपको रन करना होगा, राइट। इफ यू वांट टू यूज पीओपी यू हैव टू यूज मल्टीपल टाइम्स, अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन डिलीट। Okay, Wasi had asked a question. Can we use delete in the cities? Okay, हाँ कर सकते हैं ना। आपको अगर delete यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास cities है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप एक सिंगल आइटम रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल रिमूव करना है तो आप डिलीट यूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू रिमूव दीज टू थिंग्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, cities, दिस इज इंडेक्स व्हाट 0 1 2 3, 3 colon, so when you use 3 colon that means everything from 3, you want to remove it you can use delete over here, है ना, ठीक है। so अब देखो the list is updated, in remove also you can use index, no remove में आप you can't use index, right Soumya, in if you are using remove function you can't use index, you have to use the item name only, ठीक है। एवरी फंक्शन इज डिफरेंट, अगर दो अलग अलग फंक्शन एक ही तरीके से काम करेंगे तो फिर दो अलग अलग फंक्शन का मतलब क्या है ना। so basically every function is different, okay, they work in a different way, okay, so you know sometimes we have to use the directly the entity to remove something, तो आप remove यूज करोगे। अगर आपको if you have to remove something with the help of their address means what, index, then you can use pop, right, so you know every function is different, right, they perform different way, okay. Okay, so there was a query, or can we just give a quick revision of everything that we discussed here? Obviously, Avinasa, see, we were discussing the list. We know what is list. List is a collection of values. It can have multiple values in a single variable. Okay. Now, if it is having multiple values in a single variable, then how can we have those values addressed? Those values will be addressed with the help of the indexes, okay. Indexing will start right from 0 and end whatever, like according to the length of your list, okay. So with the help of index you can fetch a single value out of the list, okay. Can we update any value in the list? Obviously we can update any value in the list as it is a mutable data type. Here we updated Rahul into Ramesh, okay. Thereafter here also we updated a particular value over here, okay, which was initially 55.9, we made it 60.9 by adding something into it, all right. Then we had seen slicing. Slicing means slice out a particular portion of the list from the existing list. आपके पास लिस्ट है, उसमें से आपको एक छोटा सा पोर्शन चाहिए, so that you can access through slicing, right. Then we were discussing about the functions. So majorly हमने 4 या 5 functions ही देखे हैं, ठीक है, जिसमें पहला फंक्शन है append function. It is used to add a new member into the list, ठीक है। ये एक न्यू मेंबर को ऐड करेगा, एक ही न्यू मेंबर को, ओनली वन न्यू मेंबर इट विल ऐड एट द एंड, ओके। आपको मल्टीपल न्यू मेंबर ऐड करना है तो आपको अपेंड बार बार एग्जीक्यूट करना है, या फिर आपको एक्सटेंड यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली इट विल ऐड अ न्यू मेंबर इनटू द लिस्ट, ओके। so if we know how to add a new member then we should also know how to remove existing member,
right? So that can be done through remove function. Okay, using remove function, we can pass the entity name. It will remove the existing member from the list. Okay, then we have insert function. Insert function can also add a new member into the list, but at a defined address, at a defined index. ठीक है, at a defined index or address. ठीक है, so it will be added at index 3. Joy is added at index 3. Okay, index 3 कहाँ पे है? Between Ramesh and Raj, it is added. Okay, now there was a question asked, can we add more than one member using insert? See, insert या append के through आप एक से ज़्यादा member add कर सकते हो, but the thing is it will add as a nested list. Okay, that means there is a parent list, within the parent list there will be a child list. ठीक है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट ऐड हो रहा है. ठीक है, there is a parent list, within parent list there is a child list. Okay, this is done through append and insert. The other option is what? Extend. Extend will not add the new member as a child list. Simple, ये आपका like original list था, and this is extended with these two values. ठीक है, the original list is extended with these two values. There is no nested concept over here. Okay, अगर आप इस तरीके से यूज करते हो, append यूज करते हो, insert यूज करते हो, तो it will be create a nested. Nested means nested within the parent list. ठीक है, then we had seen the pop function. Pop will be used to remove an item, but here to remove an item we are using what? Index value. ठीक है, जैसे आप इंडेक्स वैल्यू 3 यूज किया है, तो 3 क्या था? जॉय का इंडेक्स वैल्यू, तो जॉय यहां से रिमूव हो गया. नेक्स्ट लाइन में आप देखो जॉय नहीं है. ओके, now we had seen insert over here, that is being used for multiple times. Okay, 3 बार यूज हुआ है, 2 4 6, so there are 3 values are inserted. Okay, this one and this one. Right, 3 values are added over here. Okay, then we have इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. जैसे किसी भी एक आइटम का आपको इंडेक्स पता करना है, आप क्या यूज कर सकते हो? इंडेक्स फंक्शन. राइट, सो यार रमेश का इंडेक्स हमें पता चल गया, इट इज इंडेक्स 3. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई रोट ओवर हियर, दैट वी हैव सीन टिल नाउ. ओके, इसके बाद आपके कुछ क्वेरीज वगैरह थे, राइट? डिलीट फंक्शन इज आल्सो देयर. ओके, थ्रू डिलीट यू कैन फीड द आइटम information from a list, it will delete that item. Okay, with delete you can delete a collection of values as well. ठीक है, पीओपी अगर आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिलीट द लास्ट एग्जिस्टिंग आइटम. देयर आर डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड रिमूव, राइट? आई होप आई मेड इट क्लियर. देन आल्सो डिलीट इज देयर, राइट? यूजिंग द डिलीट यू कैन आल्सो रिमूव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पेशेंट वेट्स था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको रिमूव करनी है, तो दैट यू कैन डू थ्रू डिलीट, राइट? Now we have these things. Okay, remove for POP, बहुत हो गया discussion इसका, POP and all. Okay, fine, all right. I hope I am clear. आते हैं कनिष्क, ऑपरेटर्स पे कैसे काम करेंगे, उन सब चीजों पे विल डिस्कस, राइट? ऑपरेटर्स पहले बता दो, फिर उस पे आते हैं.
लगे, लेट्स गो अहेड। सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज व्हाट, सीक्वेंशियल में आता है, उसे हम कहते हैं क्या, सीक्वेंशियल डेटा टाइप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टपल। ठीक है, अब टपल कैसे काम करता है, टपल इज सॉर्ट, टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, टपल इम्यूटेबल होता है, दैट मींस इम्यूटेबल इन द सेंस आई विल टेल यू। सी, आई विल डिफाइन ओवर हियर, क्या डिफाइन करूं मैं, कुछ तो इधर कर देता हूं, एम्प्लॉय एजेस। ठीक है, 23, 25, 27, 29, 21, 20, 32. Okay, I just defined something. So if I'll check it over here, this is what? This is a list, right? ये तो simple list है, आपको पता है ना? इसका type भी check कर लेते हैं. Let's check the type of this guy. This is a list, right? Now I'll make a small change, right? यहाँ से square bracket remove कर देता हूँ, right? And thereafter I'll use a parenthesis. ठीक है? When I'm using parenthesis, then what happen? This becomes tuple. So list और tuple में, like if you just look at these things, okay, operation wise there are a lot of differences, but look wise, okay, if you look at the list, it will be within a square bracket. If you look at the tuple, it will be within parenthesis. ठीक है, next, here if you have to access a single value, okay, जिसे indexing बोलते हैं, it works similar to list. Print emp underscore ages index 2. So index 2 will return me what, 27. Okay, if I want index of a guy, emp ages dot index, okay, like index of 29. Okay, so what it will do, index of 29. Okay, it is index 3. Nice. Next, fine, ये तो हो गया. अगर if you have to do the slicing, okay, then same rule. Okay, like suppose I want to slice from here to here, that means from index 2 I want to slice 3 values, right? So 2 plus 3, 5. Okay, so this is also same, slicing is also same. Okay, finding out index, finding index of an item, it is also same, right? अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, so len of emp ages. So ये तो almost it is behaving like a length of emp ages. Okay, so it is almost behaving like what, like the list. Okay, सब कुछ उसी तरीके से वर्क कर रहा है, but what's the difference? The difference is it is immutable. Okay, immutable means what, you can't make any change, no changes are acceptable. That means if I want to add a new member, I want to remove a member, I want to replace a member, nothing will work. Okay, let's see. Okay, let's see, I want to replace something. Okay, replace an entity. Okay, so let's see, we have over here emp ages
ठीक है। अब यहां से मैं कुछ रिप्लेस करता हूँ, क्या रिप्लेस को, लाइक आई एम रिप्लेसिंग इंडेक्स 2। ठीक है। देखिए, इफ आई वांट टू रिप्लेस इंडेक्स 2 इट इज बाय डिफॉल्ट 27। ठीक है, इससे हम मुझे करना है, लाइक से आई वांट टू मेक इट 30, it will say that it is not acceptable, right? So just like replace is not possible, adding a member is not possible, removing anything is not possible until unless this guy remain a tuple. जब तक ये tuple है, this variable is a tuple, right? That's why no changes are acceptable like a list. All right. Okay, now there is a question we have. Okay, Soumya had a question earlier. In delete, we should remove first three values. How can we delete? क्या क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अभी बताने का। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इन डिलीट, ओके, बेसिकली यू वांट टू आस्क हाउ कैन वी डिलीट फर्स्ट three values from a list. I guess this is your question, right? Okay, so I'll answer it, right? Okay, टपल पे आप हो गए। कनीज कहते हैं ऑपरेटर्स वगैरह जो आप कह रहे हो ना, अभी उस पे आएंगे। लाइक ऑपरेटर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो व्हेन आई डिस्कस विद द ऑपरेटर्स आई विल टेल यू हाउ कैन वी डू दैट, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर courses, but we'll go step by step. There are certain things first we finish. Right, if you don't use bracket it will consider as a tuple, right? But if suppose you are writing a code in which you are using 100 200 lines, right? So it is a good practice that you should enclose it within a boundary, otherwise there may be a chance of error. Okay, give me a minute, guys.
Alright guys, so I guess this is fine. वो लिस्ट में ऑपरेटर था, दैट इज ऑपरेटर पे आऊंगा कनिष्क, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ ना ऑपरेटर अभी नेक्स्ट टॉपिक है, पर ऑपरेटर समझा दूं, देन आफ्टर वी विल यूज दैट, राइट? लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी लिस्ट विल बी यूज फॉर सो मेनी टाइम। अभी तो सिर्फ लिस्ट का मैंने बेसिक बेसिक समझाया कि लिस्ट होता क्या है ना, तो अभी तो लिस्ट कई बार यूज होगा। ओके, सो डोंट वरी, लिस्ट टपल ये सब चीजें अभी खत्म नहीं हुई। आगे जैसे जैसे कोड करेंगे इसमें, और जैसे फॉर एग्जांपल आगे जा करके जब ऑपरेटर पढ़ूं, लाइक व्हेन वी डिस्कस ऑपरेटर, तो अगेन विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन लिस्ट। ओके, जब लूप पढ़ेंगे, सो इन द लूप आल्सो अगेन लिस्ट विल कम। ठीक है, फिर लिस्ट कंप्रीहेंशन होगा, राइट? सो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे आएंगे सब में लिस्ट यूज होगा उसके एग्जांपल्स के साथ, राइट? हाउ कैन यू डिड फर्स्ट थ्री आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट? ओके, सो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं, हाउ कैन यू डिड फर्स्ट थ्री आइटम्स इन अ लिस्ट। सी, we have a list over here, right? ठीक है, अब फर्स्ट थ्री आइटम, दैट मीन्स दीज थ्री आइटम्स यू हैव टू डिलीट, राइट? थ्री आइटम्स फोर आइटम्स जो भी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ कैन वी डू द स्लाइसिंग, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थ्री आइटम, दैट मीन्स जीरो कॉलन, आपको थ्री आइटम्स चाहिए, जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री, राइट? सो यू हैव टू डिलीट दीज थ्री आइटम्स, राइट? सो आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज सिंपल डिलीट फंक्शन, ओके, एंड कैन पास दीज थिंग्स ओवर हियर, है ना? एंड देन यू कैन यूज व्हाट, दैट्स इट। ऑल गुड। चलो, तो आपका लिस्ट हो गया, वी हैड सीन द टपल एज वेल। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, देयर इज अ मैपिंग टाइप। ठीक है, जैसे सीक्वेंस टाइप हमने देखा, दिस इज व्हाट सीक्वेंशियल टाइप, सीक्वेंसेस टाइप या सीक्वेंशियल टाइप, आप इसे कह लो सीक्वेंस, सी एस ई क्यू ई एन सी, सीक्वेंस डेटा टाइप टपल। ओके, यहाँ पे क्या था, सीक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट, राइट? अब आते हैं मैपिंग डेटा टाइप। ठीक है, मैपिंग डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप में क्या आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, डी आई सी, ठीक है। नाउ हाउ डज डिक्शनरी वर्क्स? ठीक है, सो डिक्शनरी इज बेसिकली अ की वैल्यू पेयर, राइट? इट इज व्हाट, इट इज अ की वैल्यू पेयर। ओके, व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर। ओके, सो की वैल्यू पेयर मींस व्हाट, it would be like this, we have, just a minute guys, okay, so let's see the key value pair. What is key value pair? Let's see what is mapping data type, what does the term है, mapping अभी अभी समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आई विल डिफाइन ओवर हियर स्टूडेंट
डिटेल्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल, राइट। नाउ यूज व्हाट, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। नाउ इट इज नेम कोलन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक नेम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अरुण, ओके। एंड देयर आफ्टर आई डिफाइन एज, I define with suppose 20, right? Kind of thing, right? Now let's print it. Okay. So it is a mapping data type. Mapping means what? We have a key and value over here. ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, key and value पे हो. Okay, that means name is mapped with this name. Okay, and age is mapped with this age. Okay, what does it mean? It means that अगर आपको यहाँ पे कोई एक single value चाहिए, right? Like print, if you need a single value from here, index 0, ठीक है। So it is returning an error. What does it mean? It means index plays no role over here. Who plays the role? It's this guy plays the role. Okay, that is key. Okay, here key is an important thing, right? Through key you can access the value. Okay, name, age, right? So it is having a key and value. Key and value are mapped together. That's why it is called what? Mapping data type. Okay, student details dot keys, right? And then print dot values. All right. All right. So we have a keys and values. Okay. And through keys you can fetch any value from a dictionary. Okay. How can we add a new member into the existing dictionary? Let's see. Add a new entity into the dictionary. Okay. So for that, let's say student details. This is your dictionary, right? Okay. Here we have name and age. Let's say I have to add email. So I'll call email. Okay. And then I can define a new email value over here. Right. Like say Arun at the rate google.com. Now let's say print student details. Nice. So we have a name, age, and email. Okay. Now can anyone help me to delete? Okay. Before deleting, update of value in the dictionary. How can I update the value in the dictionary? Like suppose name I have to update. Okay. Like say change age value to 15. Okay. Suppose I have to change the age value to 15, right? And next we'll do what? Delete an entity from dictionary. What I want to delete, like for example, delete email from dictionary. Okay, these two things we have to do. So first, let me know how can you do this thing, update a value. Just try to think. You can do it.
Kanishk, you are partially correct. Right, Aditya, you are correct. Okay, so here, this is how we can update a value, right? Okay, and then we can print it. ठीक है, then delete an entity कैसे delete कर सकते हैं? Okay, for deleting you can simply use delete or also you can use pop. ठीक है, अगर आप delete यूज करते हो तो then you have to pass over here student details and then email. Okay, print student details. Okay, so it is deleted. Okay, length function will give you the length over here. All right. Okay, so kindly go through the things. I'll not go for any new thing for today. Okay, that is enough for today. We'll discuss few more things in the next class. But for today, I'll ask you a question, and you have to answer me. Just a minute. There is a simple question that I'll ask you. Okay, and just try to answer me. Okay. Okay. How can I separate John from following list? कैसे सेपरेट कर सकते हैं जॉन को इस लिस्ट से, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट अजय, राइट? सो यहाँ पे अजय के लिए क्या करेंगे हम? इंडेक्स वन. ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन सेपरेट अजय
emp underscore names index 1। ठीक है। सो ऐसे अजय को सेपरेट कर सकते, राइट? सो सेम वे हाउ कैन यू सेपरेट जॉन? Okay. Two topics in the next class we will discuss set. Okay, one more data type which is called set and binary, which will not take much time. And thereafter we will discuss operators. Okay, and then we'll discuss conditional programming. Okay, so set and Boolean data type will hardly takes 5 minutes or hardly 10 minutes, you can say. Thereafter we will discuss operators that will take, I guess, half an hour to 45 minutes. And thereafter we'll discuss on the conditional programming. Okay. बताइए क्या है सॉल्यूशन इसका? ठीक है। Kanisk had given me a solution that okay we can use this, but this is incorrect, I guess, right? Sorry. ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो दिस इज नॉट वर्किंग राइट हियर। ओके फाइन, emp नेम्स, ठीक है, इसको सही कर देते हैं, चलो वो तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं। सो इट इज नॉट वर्किंग राइट, सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, राइट? ओके, एनी अदर सॉल्यूशन? Yeah, Aditya had given something, but that is also, I guess, partially correct. Let me try. Okay, you are a little close. Okay, Avisa had given me a solution. Yeah, Avisa is also very close. Okay, so this is giving me John and I, but I only want John from here. MP names dot separate. What is this? What is separate function? From where you got this thing? Who told you this separate function? Okay, anyway, that's fine. Yeah, anything, right? कुछ भी है. Okay, three. Okay, three. Three. See all. See what you just see over here. Let's try to see the logic. All of you are very close, very very close. See what happened. This is a parent list, right? Parent list में this is a child list. इसे कहते हैं nested list. Nested, right? So we have separated the nested list. Okay. अब इसमें से आपको जॉन चाहिए, right? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप इसके बाद इंडेक्स 0 आप यूज कर लो, है ना? दैट्स इट। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू आर वेरी क्लोज। सिर्फ अगर आप इतना एग्जीक्यूट करते हो तो आपको एक लिस्ट मिल गया, यू गॉट अ लिस्ट, राइट? ओके, एंड दैट लिस्ट इज हैविंग टू वैल्यूज, फ्रॉम दोस टू वैल्यू यू वांट ओनली दिस वैल्यू, सो अगेन यू कैन पास इंडेक्स 0 ओवर हियर। आप इंडेक्स 0 इसके अंदर ही पास कर दे रहे हो, राइट? यू कैन पास इट सेपरेटली। एनीवे, सो दैट इज इट फॉर टुडे। we'll discuss some new things in the next class. So please do join and write down your doubts. First, we'll take your doubts and thereafter we'll move ahead. Shall I close it for now?
Thank you guys. Have a great day.